everyone, I welcome you all to a very special podcast. आज हम बात करने जा रहे हैं रियल सेल्फ केयर की। वो सेल्फ केयर जो सिर्फ ब्यूटी, स्किन केयर या मेकअप तक सीमित नहीं है। Today we will talk about the real self care जो जिंदगी बचा सकती है। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी जो हर साल हजारों जिंदगियां छीन लेती है। और किस लिए? क्योंकि हम टाइम पे स्क्रीनिंग ही नहीं कराते हैं या फिर हम सिम्टम्स को इग्नोर करते रहते हैं। एज अ वुमन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एज एन एजुकेटर, मुझे लगता है ये हम सबका फर्ज बनता है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ सुंदरता को ही प्रमोट नहीं करें बल्कि सुरक्षा को भी प्रमोट करें। और इसी मिशन के साथ आज मेरे साथ मौजूद हैं सुरोस्की के फाउंडर्स दीपाली एंड पुनीत and Mr. Mohan Singh, the director of UniMed and Tech, a healthcare breast cancer screening company. थैंक यू मनमीन मैम। सो आज हम यहाँ किसी नए लॉन्च या किसी सेल के लिए नहीं आए बल्कि एक मैसेज लेकर आए हैं। रियल सेल्फ केयर स्टार्ट्स विद योर हेल्थ। Breast cancer awareness is not just important, it's urgent. That's why we thought of breast cancer screening camps. Let's take this seriously, let's break the silence. Let's make breast cancer awareness everyday part of our conversations. आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ना सिर्फ अर्ली डिटेक्शन की बल्कि प्रिवेंशन की भी एंड अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने की। तो जुड़े रहिए हमारे साथ एंड इस वीडियो को हर वुमन के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। दीपाली एंड पुनीत, आई वुड लाइक टू आस्क यू, सुरोस्की इज वाइडली नोन फॉर सेल्फ केयर, स्किन केयर। इनफैक्ट मैंने बहुत प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं आपके लिए। What made you step into something like this, breast cancer awareness? What was your motivation behind? So at Swarovski, we believe real self-care is taking care of your whole self. Not just your skin, but your health too. Breast cancer is a serious issue, and having maximum of female community, we thought we should do something about it and spread more and more awareness so that we can bring a change in the society and health. So do you feel that beauty and health, they go hand in hand? Especially when it comes to confidence and self-awareness. Yes, 100% ma'am. Beauty and health goes hand in hand. We at Swarovski feel if you are healthy from inside, then only you can look good outside. And when both of them complement each other, then you are the most confident person. So yes. दीपाली, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, what message do you want to send through this awareness camp? So basically, women's ignore कर देती हैं अपनी हेल्थ। They don't take it too seriously. अपनी फैमिली का ध्यान रखने में वो अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देती है और टाइम इतना निकल जाता है कि हम स्कैनिंग टाइम पे नहीं कराते तो वो हम क्योर ही नहीं कर पाते, डिटेक्ट नहीं हो पाता। अगर हम उसे टाइमली टेस्टिंग करा लें, वो डिटेक्ट हो जाए तो we can cure it earlier. मुझे पता चला कि ये एक वन टाइम कैंप नहीं है। इनफैक्ट you guys are committed to get the screening done for thousands of women in multiple takes. Why? What was your inspiration? Ma'am, the idea is basically one camp won't give a real impact. So we want to add more and more people and spread maximum awareness possible. And the idea is to do minimum of 10,000 screenings per year for the next coming 3 years. So that makes it 30,000. 30,000. And ma'am, it's just the beginning. We're going to do it like as much as it's possible. That's amazing. Mohanji, I'd like to ask you, how common is breast cancer today? It is one of the most common cancers in female in globe as well as in India. In US alone, in 2025, it is expected that over 3 lakhs women will be diagnosed with breast cancer. In India, it is 1 in 20. And the major problem is the lack of infrastructures in India for screening programs. So most women, they don't even know they are at risk. Am I right? Yes, many of them think they are fine, have no family genetic history, but over 90% of cancers are because of lifestyle, not because of genetics. जी, आपको क्या लगता है? What is the key solution for this problem? So awareness and self prioritization. एक लेडी को स्क्रीनिंग रेगुलर करानी चाहिए. This will help early detection of breast cancer and will save life. मगर मोहन जी, what will happen अगर कोई डिटेक्शन में लास्ट स्टेज पे पकड़ा जाता है? Late stage means cancer will spread to the other parts of the body. Treatment difficult हो जाएगा and mortality rate बढ़ जाएगा. 50% of women will not survive more than 5 years after the treatment. अच्छा, traditionally breast cancer was usually detected in older women. क्या ये सच है? No, not anymore. अभी 20s, 30s में भी women को cancers detect हो रहे हैं and you will be surprised to note that
the triple negative breast cancer, which is more aggressive form of breast cancer, is increasingly seen in the younger women. नंबर ऑफ केसेस में कुछ फर्क रहता है सिटी वर्सेस गांव? So, in cities like Mumbai and Delhi, more number of breast cancer cases are diagnosed because यहाँ पर awareness अच्छी होती है, infrastructures and accessibility to the healthcare system is better. Whereas in villages or rural areas, they go undiagnosed, unnoticed because of lack of awareness. And that's where the importance of Unibandentech comes. We are promoting the screening programs for early detection of early cases. If you could explain what is an eye breast exam and how is it different? So, something called clinical breast examination, जिसमें एक डॉक्टर फिजिकली ब्रेस्ट कैंसर में डिटेक्ट करने की कोशिश करता है. Okay. एक मैमोग्राम होता है which is like an X-ray of a breast to detect the lump in the eye breast exam is a portable handheld pain-free radiation-free device which has got capability of screening the cases even at the village level. अच्छा जी. Okay. तो फिर सर what about self exams? Self examination is a woman doing of for herself. ये ज़रूरी है but it is not adequate. Whereas eye breast exam can detect your cases at early stages and good for the screening programs. आपको क्या लगता है क्या वजह रहती है? Why do women delay the screening? Lack of awareness, shy, fear and social stigma, जिसकी वजह से एक वुमेन एक्टिवली स्क्रीन नहीं करती है और डिटेक्ट टाइम से नहीं हो पाता है. Lack of affordability also. एंड मोर देन दैट मुझे ऐसा लगता है कि टाइम ही नहीं है लोगों के पास, इतनी बिजी लाइफ है, दे डोंट प्रायोरिटाइज देयर हेल्थ. सी अवेयरनेस है, सबको पता है, बट वो प्रैक्टिस नहीं होता है. हाँ. प्रैक्टिस नहीं होता है क्योंकि हमको कोई पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन कुछ है ही नहीं. हाँ. It's hiding inside and you don't know it. हाँ. अफोर्डेबिलिटी इसमें इन्होंने दिया है, इस कुड बी ए रीजन, बट मेरी जरूरत होगी तो मैं अफोर्ड करूंगा ना उसको, मुझे पता ही नहीं इसको करना है. हाँ. राइट. Let's burst the biggest myths about breast cancer. Only older women get it. फॉल्स. No pain means no cancer. फॉल्स. Only family history can cause it. फॉल्स. Screening is only for sick people. फॉल्स. Any final Final words. A female should always go for screening regularly for early detection of breast cancer because early detection means better treatment and save lives. Any final words, Puneet? So ma'am, as we at Swarovski have started this and planning to do this, I believe everyone should come up, all other businesses also should come up and work in this direction and spread as much as awareness is possible. Cause जो ma'am चीज़ समझ आई है कि you don't know it's there inside, hiding inside your body, and once you've screened it, then only we can be sure that yeah, you're safe. So like let's spread as much as awareness possible. First of all, I'd like to thank Mohan Singh for his valuable time and input, and Puneet and Dipali for creating this awareness campaign and funding these screening programs, जो बहुत important है. आज हमने इनकी importance को समझा है. आप लोगों को अब एक काम करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ये स्क्रीनिंग जब हम टाइम एंड डेट आपके साथ शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर इसको करवा सकें. एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगी Swarovski की तरह अदर बिजनेसेस को भी कि वो आगे आएं और इस तरीके के अर्ली डिटेक्शन ब्रेस्ट कैंसर के सेल्फ स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स को सपोर्ट करें. ये नीड ऑफ द आवर है. लेट्स टॉक अबाउट इट. लेट्स share it as much as we can. Thank you. Thank you so much.